गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। तो जैसे कि मैंने आपको जो ये कुछ शब्दों के बारे में पिछली कक्षा में बताई थी, तो और फिर से जो है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एक ही मात्रा के बारे में मैंने पिछली कक्षा में आपको बताई थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक जो है रेल है। तो रेल जो है आप जैसे कि जानते हैं, रेल को जो है क्या कहते हैं, हम ट्रेन कहते हैं। तो जो ये कन्नड़ में जैसे कि आप जानते हैं रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी कहते हैं। और भेड़, भेड़ जो ये दरअसल क्या है, भेड़ को है हम क्या कहते हैं, शीप, शीप कहते हैं। जैसे कि कन्नड़ में जो ये क्या कहते हैं, यहाँ पर पूरी कहते हैं। तो पेड़, पेड़ यानी आप जानते हैं यहाँ पर जो है इसे जो है इंग्लिश में जो है ट्री कहते हैं, और जो है कन्नड़ में जो है वृक्ष अंतड़ी करीತಾರೆ। ओके, तो नेक्स्ट वन जो है क्या है, मेला। तो इस तरह जो है मेला दिया गया है। मेला जो है इस इंग्लिश में जो है दरअसल हम फेयर कहते हैं, और कन्नड़ में जो है दरअसल हम क्या कहते हैं, जात्रे। तो जात्रे अथवा ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ। तो देखिए आगे चलते हैं, शेर। तो शेर जो है दरअसल आप जानते ही, शेर जो है वो लायन है। उसके बाद जो है हम कन्नड़ में उसे जो है सिंह कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मेमना, मेमना यानी कि लैम होती है। लैम नहीं बल्कि लैम, केवल लैम है। और उसे जो है आप जानते ही हैं, इसे यंग शीप भी कहा जाता है, यंग शीप भी कहते हैं। और कन्नड़ में जो है जैसे कि इसे जो है क्या कहते हैं, कुरीमरी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ लिख दिया है। तो आइए चलते हैं, फिर से जो है मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो ठीक है, आइए चलते हैं। यहाँ पर देखिए देखिए फिर से जो है ये जो ये है, ठीक है, ये है जो ए की मात्रा जो है इस तरह आती है, ए की मात्रा इस तरह आती है। ये भी जो है ए की मात्रा है। तो ये जो है ए है, ए की मात्रा जो है इस तरह लिखा जाता है। तो मैं फिर से आपको जो है वहाँ पर उन शब्दों को दोहराती हूँ जो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाई थी। तो ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಇನ್ನಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ। तो देखिए रेल, रेल जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेन कहते हैं। कन्नड़ में क्या कहा जाता है, रेलगाड़ी। ओके, तो दूसरा जो है भेड़ है। भेड़ को जो है हिंदी में क्या कहते हैं, हम जो है भेड़ कहते हैं, और जो इंग्लिश में जो है शीप कहते हैं। कन्नड़ में जो है कुरी इस तरह कहते हैं। और तीसरा जो है पेड़ है। पेड़ को जो है इंग्लिश में ट्री कहते हैं, और कन्नड़ में जो है वृक्ष इस तरह कहते हैं। चौथा जो है दरअसल मेला है, और जो इंग्लिश में फेयर कहते हैं, और कन्नड़ में जो है जाते इस तरह कहते हैं। और जो है पांचवा जो है वो शेर है। शेर को जो है इंग्लिश में लायन कहते हैं, और जो है कन्नड़ में सिंह कहते हैं। और जो है छठा जो है दरअसल मेमना है। इसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में लैम कहते हैं, और यंग शीप भी कहा जाता है। और कन्नड़ में जो है कुरीमरी इस तरह कहते हैं। तो फिर चलिए मैं आपको फिर से जो है समझाती हूँ। ನೋಡಿ ಏನಂತಾರೆ, ರೇಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರೇಲ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಲುಗಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಬೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬೇಡ್ ಇದು ಹಿಂದಿಯ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಬೇಡಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಶೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನೋಡ್ರಿ ಪೇಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಆ ಪೇಡ್ ಇದು ಹಿಂದಿ ಶಬ್ದ, ಪೇಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ ಅಥವಾ ವೃಕ್ಷ ಅಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तो देखिए यहाँ पर जो है मेला शब्द है, मेला जो है शब्द है मेला। तो इंग्लिश ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। ಶೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, लायन ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ। तो मेमना जो है दरअसल शब्द है, तो इसी जो है इंग्लिश में लैम कहकर पुकारते हैं, और जैसे यंग शीप भी कहा जाता है। ನೋಡಿ मेमना ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುರಿಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। तो देखिए मैं फिर से आपको जो है यहाँ पर समझाती हूँ। तो देखिए चलिए यहाँ पर मैं फिर से आपको समझाती हूँ। एक ही मात्रा तो इस तरह है। तो देखिए ये जो है ये है,
ए की मात्रा जो है इस तरह आती है। तो कभी भी जो है लिखते समय जो है आपको ए की मात्रा जो है इस तरह ही लगानी है। किसी भी शब्द में जो है जब आप ए की मात्रा का इस्तेमाल करते हुए जो शब्द भी लिखे जाते हैं तो उनमें जो है ए की मात्रा को उसके ऊपर जो है इस तरह ही आपको लगानी है। ನೋಡ್ರಿ ಎ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಈ ಥರ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು। रेल अंत इसके नंतर है जो ये रेल जो है हिंदी शब्द है, तो कन्नड़ में जो है इसे रेलगाड़ी कहते हैं और जो है इंग्लिश में ट्रेन कहते हैं। ये जो है भेड़ देखिए ये जो चित्र है वो भेड़ का चित्र है। हिंदी में से इस प्राणी को जो है भेड़ कहा जाता है और जो है इंग्लिश में इसे जो है शीप कहते हैं और जो है कन्नड़ में इसे कुरी कहा जाता है। तो देखिए तीसरा जो है वो चित्र है दरअसल एक पेड़ का चित्र है। आप देख सकते हैं ये जो है पेड़, इसे हिंदी में जो है इसे जो है जिस चित्र को जो है हिंदी में पेड़ कहा जाता है और इंग्लिश में जो है दरअसल ट्री कहते हैं, कन्नड़ में जो है मरा और वृक्ष कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यह चित्र में जो है दरअसल मेला है। चित्र से पता चलती है कि यहाँ मेला है। तो मेला जो है दरअसल हिंदी शब्द है। ये जो है इसे जो है कन्नड़ में हम जात्रा कहते हैं, जात्रे को ये हिंदी में जो है मेला कहा जाता है और इंग्लिश में जो है फेयर कहते हैं। ठीक है, तो पांचवा जो है दरअसल ये चित्र है किसका है, किस प्राणी का है, वो शेर जो है। शेर जो है दरअसल हिंदी शब्द है, इसे इंग्लिश में जो है लायन कहते हैं और कन्नड़ में जो है दरअसल हम सिंह कहते हैं। तो ये चित्र जो है वो छोटा प्राणी है। इस छोटे प्राणी का नाम है मेमना है। इस प्राणी को जो है हिंदी में मेमना कहा जाता है और इसे जो है इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लैम कहकर पुकारते हैं और जो है यंग शीप भी कहा जाता है और ಕನ್ನಡ में जो है ಕುರಿಮರಿ कहा जाता है। ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಟ್ರೇನದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ। ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಲು ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇನ್ ಅಂತಾರೆ। ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಚಿತ್ರ। ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಶೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ। ಇದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮರ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ। ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಚಿತ್ರ ಎದುರದಿದೆ, ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಇದೆ। ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ। ನೋಡಿ ಇದು ಚಿತ್ರ ಯಾವುದಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಚಿತ್ರ। ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ। ನೋಡ್ರಿ ಇದು 6ನೇ ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ। ಆ ಪುಟಾಣಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಮ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುರಿಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, इंग्लिशನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಂಗ್ शीप ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ। तो देखिए इतने सारे जो है मैंने ठीक तरह से आपको जो है बता दी है। तो आप देख सकते हैं इन सारे शब्दों के जो है ऊपर जो है क्या लगाई गई है, एक ही मात्रा जो है लगाई गई है। र के ऊपर जो है एक ही मात्रा है, भ के ऊपर जो है एक ही मात्रा है, प के ऊपर एक ही मात्रा है, म के ऊपर एक ही मात्रा है, श के ऊपर एक ही मात्रा है, म के ऊपर एक ही मात्रा है। इन सारे शब्दों को आप देख सकते हैं ಮಾತ್ರಾ ಲಗಾಯಿ ಗೈ ಹೈ। ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏಕಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಬ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಶ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಮಾತ್ರ ಇದೆ। ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ऊंचे स्वर में पढ़िए, बेर, छेना, रेशम, केवल, रेलगाड़ी, मेज, केला, सेहत, केरल, मेहमान। ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು। ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಆ ಎ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು, ಈ ಎ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ। ಬ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಚ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ, ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಕ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ, ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಕ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಸ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಕ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಮಾತ್ರೆ ಇದೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ। तो इस तरह ये सारे शब्द जो हो गए हैं, सभी जो है एक ही मात्रा से बनी हुई सारे शब्द है। ठीक है, तो मेमना और शेर जो है ये जो छोटी सी कहानी है। ठीक है, तो देखिए मेमना और शेर एक छोटी सी कहानी है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। एक था मेमना, एक दिन वह बिना पूछे अकेले ही घूमने निकला, उसने मीठे मीठे बेर खाया और आगे चला। तो देखिए इस तरह जो है दिया गया है मेमना और शेर। एक था मेमना, एक जो है मेमना था, एक दिन वह बिना पूछे ही अकेले ही घूमने निकला था, तो उसने मीठे मीठे बेर भी खाए और आगे चला। इस तरह दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक जो छोटी सी कहानी है
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಮ್ನಾ ಅಂತಿದೆ. ಮೇಮ್ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಕುರಿಮರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮೇಮ್ನಾ ಮತ್ತು ಶೇರು ಈ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಆ ಪುಟಾಣಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೇಮ್ನಾ ಇದೆ, ಇದು ಶೇರು, ಈ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. तो एक था ಮೇಮ್ನಾ, ಒಂದು ಮೇಮ್ನಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಏಕ್ ದಿನ ವಹ ಬಿನಾ ಪೂಛೆ ಅಕೇಲಿ ಘೂಮ್ನೆ ನಿಕಲ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಾರ್ದೆ ಕೇಳಾರ್ದೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತೋ ಉಸ್ನೆ ಮೀಠೆ ಮೀಠೆ ಬೇರ್ ಖಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೀಠೆ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಸೇಬ್ಗೆ ಪೇಡ್ತಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗ್ತವೆ, ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಆ ಸೇಬು, ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಎರಡು ಬನಾನಾ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಎರಡು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ ಎರಡು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇಬ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಪಲ್, ಸೇಬು ಹಣ್ಣು, ಎರಡು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಉಸ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಸೇಬಿ ಕಾಯ. ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೋಗಿ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. तो देखिए इस तरह जो दिया गया है. तो इस छोटी सी कहानी के बारे में और भी जो है हमें क्या करूँगी, अगली कक्षा में आपको बताऊँगी. ठीक है, तो अगली कक्षा में हम जो क्या करेंगे, छोटी सी कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे. ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರೇಲ್ ಇದು ಹಿಂದಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಟ್ರೈನ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೇಲುಗಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಡಿದೆ, ಬೇಡಿಗೆ ಒಂದು ಶೀಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೇಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಅಂತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರ ಅಥವಾ ವೃಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೇಲ, ಇದು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ ಇದು ಹಿಂದಿ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಅಂತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಮೇಮ್ನಾ ಇದು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುರಿಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಂಗ್ ಶೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. तो देखिए, आप देख सकते हैं, रेल जो है हिंदी शब्द है, से इंग्लिश में ट्रेन कहते हैं, कन्नड़ में रेलगाड़ी कहते हैं. पेड़ जो है हिंदी शब्द है, शीप कहते हैं इंग्लिश में, और कन्नड़ में कुरी कहा जाता है. पेड़ जो है हिंदी शब्द है, से ट्री कहते हैं इंग्लिश में, और कन्नड़ में जो है मर अथवा वृक्ष भी कहा जाता है. मेला जो है दरअसल हिंदी शब्द है, उसे इंग्लिश में फेयर कहते हैं, कन्नड़ में जो है जाति अथवा उत्सव भी कहा जाता है. शेर जो है हिंदी शब्द है, उसे इंग्लिश में जो है लायन कहते हैं, कन्नड़ में जो है सिंह कहा जाता है. मेमना जो है हिंदी शब्द है, उसे जो है इंग्लिश में लैम कहते हैं, और इंग्लिश भी कहा जाता है, और कन्नड़ में जो है कुरीमरी इस तरह कहते हैं. तो आगे क्या करेंगे, अगली कक्षा में जो है हम इस छोटी सी कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.